everyone. A very good evening and a very warm welcome to the session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. Sasrikal, Namaskar, Bonjour, Adab. In another session of mineral and energy resources. बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चों. आज हम डिस्कस करने वाले हैं the hazards of mining and the conservation methods that can be used to curb these hazards, which is led forward by the whole process of mining, right? Let me quickly also introduce myself. Hi बच्चा, मेरा नाम अंकना है and I am your expert for social sciences at Embibe. I have done my studies in the field of humanities, come with an experience of more than 9 years being associated with the education sector, and I specialize in social science and English also, given my background in humanities. Talking about the chapter, तो यार चैप्टर जो है हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये मेजरली 3 टॉपिक्स में बांटा जा सकता है. फर्स्ट वन इज मिनरल्स एंड देयर मोड ऑफ अकरेंस, सेकंड इज मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, थर्ड इज एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया. सो इन द वेरी फर्स्ट सेशन वी डिस्कस्ड मिनरल एंड देयर मोड ऑफ अकरेंस. In the second session, we discussed the various mineral resources in India, where we discussed the ferrous and the non-ferrous, minerals and how are they mined, where are they found. We looked at the map and the location. Today, we are going to talk about the hazards which can be led to. So, concepts, if I have to say, we are going to talk about. So, few of the minerals were left. Mica and limestone we had not discussed. The non-ferrous minerals we'll discuss today. Conservation of minerals we'll discuss today. And hazards of mining we will discuss today. So let's get started. Hi Abhimanyu, hi Rudra, very good evening. Hi Nitesh, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में. Let's have a quick recap of what we have done in the previous session. Bacha, please do not forget to share the link of the video with your friends. Let them know that ma'am is already live and discussing the various minerals and the hazards that mining can cause. Because again, this is the middle of this chapter. छूट जाता है तो gap बन जाता है. तो उनको बता दीजिए कि वो भी सेशन ज्वाइन कर ले. Starting with the recap, we have in the previous session discussed about the mineral distribution. What we saw is, so we have already seen, right, that there are geologists and there are geographers who are doing a study of the minerals. जो study करते हैं minerals को कहाँ मिलता है, quality क्या है, quantity क्या है. Based on that, the mining activities are carried forward, right? ठीक है. नितेश, बच्चे आपका गोल सही सेट है. हैव यू डन 10th CBSE? बिकॉज आई हैव स्टूडेंट्स वाचिंग माय सेशन राइट नाउ ऑन द इम्बाइब ऐप. सो आई एम श्योर कि क्लास शो तो हो रही है. एक बार आप वापस रिफ्रेश कर लो, लॉग आउट करके लॉग इन करके चेक कर लो, वहाँ होनी चाहिए शो. ठीक है. तो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट ऑल मिनरल्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर. हर जगह सारे मिनरल्स हमें नहीं मिलते. कहीं पे कुछ मिलते हैं, कहीं पे कुछ नहीं मिलते हैं. ठीक है. So it varies due to the geological differences, because there are various minerals which are found or which have come on the surface because of the volcanic eruption. तो जहाँ पे volcanic eruption हुआ है, igneous rocks से वहाँ मिलेंगे. Depending upon the geography, it varies. ठीक है. Then we understood that there are two kinds of minerals. We have the ferrous minerals, which are the one which consist of iron, and we have the non-ferrous minerals which do not consist of iron. ठीक है. तो ये दोनों ही माइनिंग इंडिया में होती है. फेरस इज मोर माइंड देन द नॉन फेरस मेटल्स. तो फेरस में हमने देखा कि फ्रॉम 75% ऑफ मेटेलिक मिनरल प्रोडक्शन जो है वो फेरस मिनरल्स की होती है इन द माइनिंग इंडस्ट्री, एंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री, नॉट जस्ट द माइनिंग इंडस्ट्री बट एंड नॉट जस्ट द आयरन इटसेल्फ, बिकॉज as a mine, as an ore, as a mineral, but actually आयरन जो है सपोर्ट्स दी अदर इंडस्ट्रीज एंड अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज एज वेल, राइट? कॉपर कह लो, एल्यूमिनियम कह लो, ऑल द मशीन्स एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील. सो दैट बिकम्स अ बेसिक इंडस्ट्री, मेकिंग इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हाई सिमरन, लॉन्ग टाइम नो सी, वेलकम टू द सेशन. हाई विकास. सो आयरन ओर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इज मेजरली फाउंड इन योर छोटा नागपुर बेल्ट एंड सम प्लेसेस ऑफ कर्नाटका एटसेट्रा. सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये आपका छोटा नागपुर बेल्ट हो गया. एंड कर्नाटका में कुद्रेमुख इज वन प्लेस वेयर प्राइमरली इट इज फाउंड. मोस्ट ऑफ द आयरन दैट गाइज वी एक्चुअली प्रोड्यूस, अ लॉट ऑफ इट इज इन फैक्ट एक्सपोर्टेड. वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, हम दूसरे देशों को बेच देते हैं. मैग्नीज उसके बाद दूसरा हमारा हो जाता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर स्टील, फॉर अलॉय मेकिंग, स्टील के मेकिंग के लिए, अलॉय मेकिंग के लिए, एंड वेरियस इंडस्ट्रीज डिस्पाइट
you know, India's mineral limitation. We have all of these as well. And then we have the non-ferrous minerals, which is the non-iron minerals like aluminium, जो bauxite से निकलता है. Then you have copper, which is very important. Both of these are very important for the electronic industry. ठीक है, engineering, electrical sectors, metallurgy, which is the study of metals, इन सारे industries के लिए बहुत ज़रूरी है. So on that note, let's get started with the next session. Hi Mamta, good evening. Welcome बच्चे. Some of the minerals, guys, is present on earth and are said to be ubiquitous. What do you mean by that? It basically means that you can find them everywhere. If you see, the very first point that we discussed over here is that the availability of mineral varies from place to place. It may be available in some places, it may not be available in some places, and all minerals are not found everywhere. But there are minerals which is ubiquitous, which is found everywhere. हर जगह मिल जाएगा, जैसे नमक. ठीक है? Try digging in the backyard of your house and you may easily find some non-metallic minerals like sand, gravel, clay, salt. ठीक है? What are these non-metallic minerals and what is their significance? Let's figure it out in today's session. So getting started with mica. If you're from Jharkhand, ठीक है, I am from Jharkhand because mica तो यार सड़कों पे पड़ा मिलता है. You will find mica everywhere. So mica are these small particles which shines and you will feel like maybe it's remains of mirror. A mirror might have broken here और उसके टुकड़े रह गए, वो टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए, वैसा शाइन करता है माइका, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. So it is made up of thin plates or leaves easily splitting into sheets. So अगर माइका की बात की जाए तो माइका देखने में एक लेयर लगेगा but it will have multiple layers. So these particles, if you find shining silver particles lying around somewhere, go pick it up and check it out. If you look or try to break it if it's possible, you'll find that there are layers, clear layers will be available over there. So as a result of that, it can easily be, transformed. So the malleable the malleable quality is very high. It can easily be transformed into incredibly thin and forming layers in mica sheets. ठीक है, तो बहुत बहुत पतले शीट्स माइका के हम बड़े आराम से और प्यार से जो है बना सकते हैं. वेरियस कलर्स में ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन आपको मिलता है. ठीक है, एग्जिबिट्स एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज. तो हाई वोल्टेज पे रेजिस्टेंस तो मतलब जैसे कि स्टेबलाइजर वगैरह में काम आ गया. माइका वहाँ यूज होता है कि नहीं, आई एम नॉट 100% श्योर, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ठीक है, या लो पावर लॉस हो रहा है तो इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर इन अ वे. मतलब पावर लूज नहीं करेगा, उन सारी जगहों पे आप यूज़ कर सकते हो. इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं. ठीक है, इट इज़ एन एसेंशियल मिनरल इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स बिकॉज गुड कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सारी चीज़ें हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस है. तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है. नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो में बहुत मिलता है. एज आई टोल्ड यू, आई एम फ्रॉम झारखंड विच इज़ द नॉर्दर्न एज and like eastern northern edge of your Chota Nagpur plateau. If you actually travel on the roads, the sidewalk, if a cemented footpath is not created, if it's just the regular soil that is there, in so many places, if it's a sandy kind of soil, you will find silver particles shining everywhere around. So mica is just lying there on the roads. Major production areas आपका कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट एंड झारखंड, leading producers, because if you actually travel on the roads you'll be able to see mica lying down everywhere. Ajmer in Rajasthan, Nellore mica belt in Andhra Pradesh is also there. ठीक है, so let's quickly answer the super easy question, which is Kodarma in Jharkhand is the leading producer of which of the following minerals. यार अभी पढ़ा ही एक है, we have just done one, so this is like the easiest question possible, so let's not spend a lot of time on this question. Quickly go ahead and answer. Bauxite, mica, iron ore or copper. Which mineral are we talking about? Which mineral are we referring to? Simran, I'm glad that in some way these sessions are helping you out. नितेश, क्या दोबारा समझाना है? आप मुझे बता दो दोबारा आपको क्या समझाना है, मैं समझा दूंगी. Hi Sunil Pawar, good evening, welcome.
तो अभिमन्यु, रुद्र एंड प्रणति हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बात है, ठीक है, और काफी जल्दी जवाब दे दिया है। मुझे लगता है मेरी बात को कि बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, बहुत सीरियसली ले लिया तुम लोगों ने। धनुष, उत्कर्ष एंड तन्मय, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू आंसर। Which of the following mineral is produced at the highest encoderma, making it the leading producer? अभिमन्यु, रुद्र, उत्कर्ष, प्रणति, वंडरफुल। और हमारे पास आ गए हैं तन्मय ने भी अटेम्प्ट ले लिया है, ओके, और धनुष ने भी ले लिया है। चलिए ठीक है, माइका इज द करेक्ट आंसर। ये आपको छोटा नागपुर के नदर रीजन्स में वैसे भी हमने देखा है, पिडमॉन्ट रीजन में बहुत ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइका इज अ मेटेलिक मिनरल दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। माइका एक ऐसा मेटेलिक मिनरल है जो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स? Guys, if you heard me explaining how mica looks like, even like with little bit of attention, you would know if it is a mineral that reflects light or not. ओके, अभिमन्यु, धनुष, प्रणति, गुड जॉब, करेक्ट आंसर। और काफी जल्दी जवाब दिया है वैसे। उत्कर्ष, तन्मय ने भी अटेम्प्ट लिया है, रुद्र ने भी अटेम्प्ट लिया है, और ये फॉल्स है, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा है इट्स अ नेचुरल नॉन मेटेलिक मिनरल दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। हाँ, दैट्स व्हाट आई थॉट, इट डज रिफ्लेक्ट लाइट। ये क्वेश्चन क्या है? देयर इज अ मिनरल दैट राइट दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, तो बिकॉज इट्स सिल्वर, राइट। सिल्वर चमकता हुआ आपको ऐसा लगेगा मिरर के टुकड़े गिरे हुए हैं। सो व्हेन इफ आई एम सेइंग इट्स अ पार्टिकल ऑफ अ मिरर, नेचुरली बहुत रिफ्लेक्शन हो रही होगी, सिल्वर सा होता है, तो इट इज बेसिकली मेटल विच विल लुक लाइक अ पीस ऑफ अ मिरर। इट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑफ लाइट एंड इज अवेलेबल इन मल्टीपल कलर्स, ठीक है। चलो अब लाइमस्टोन की बात करते हैं। लाइमस्टोन जो है बच्चे सेडिमेंटरी रॉक्स में मिलता है हमें, ठीक है, जहाँ पे सेडिमेंटेशन लेयर ऑन लेयर होता है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज फॉर्म्ड ऑफ। सीमेंट का ये आपका लाइमस्टोन जो है वो रॉ मटेरियल है। दिस इज व्हाट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इन इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर इन ब्लास्ट फर्नेसेस। सो जब स्मेल्ट किया जा रहा है, ठीक है, पूरा जो फंक्शनिंग पूरा आयरन इंडस्ट्री में आपको जो प्रोसेसिंग होता है, आपको पता होगा बहुत ब्लास्ट फर्नेसेस होते हैं, लाइक लॉट ऑफ हीट इज ब्लास्ट की तरह से प्रोवाइड किया जाता है और उसमें मेल्टिंग होती है। वहाँ पे भी लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा काम आता है। वेरियस जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में मिलता है, प्राइमरीली सेडिमेंटरी रॉक में आप लाइमस्टोन को पाओगे। तो कहाँ मिलता है, कौन से फॉर्म ऑफ रॉक में आपको लाइमस्टोन मिलेगा, वो बताना है आपको इन दिस क्वेश्चन। लाइमस्टोन इज फाउंड इन डैश रॉक्स, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक। The limestone is found in which of the following rocks? Sedimentary or metamorphic? Okay, super easy question. They are majorly found in. Rudra has answered absolutely correct and perfect timing. Abhimanyu, Utkarsh and Pranati, good job. Correct answer hai. Dhanush and Tanmay waiting for you to answer. Sedimentary rock, you guys, is the correct answer. Primarily कहाँ मिलता है sedimentary rock? और भी geographical formations में पाए जाते हैं, but primary हमें पता है कि sedimentary rock में मिलता है, is the main raw material for cement.
एंड आयरन की स्मेल्टिंग में भी कई बहुत ज़्यादा काम आता है. Now talking about the conservation of minerals. Only 1% of Earth's crust contains workable mineral deposit. क्रस्ट वैसे ही बहुत पतला है, उसमें भी 1% जो है वो वैसे मिनरल्स कंटेन करता है विच हैज़ द डिपॉजिट्स विच इज़ इनफैक्ट यूजफुल फॉर अस. ठीक है, बाकी कई सारी चीज़ें यहाँ पे मिनरल्स मिल तो जाएंगी बट सारी के सारे हमेशा काम नहीं आती हैं. ठीक है, सारे हमारे लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है. सेडिमेंटरी रॉक, विकास एब्सोल्युटली करेक्ट. हाय अक्षांश, लॉन्ग टाइम. हाय, वेलकम बैक टू द सेशन. Mineral formation is a very slow process making resources finite and non-renewable. पहला सवाल ये है, why do we need to conserve the minerals? क्यों बचाना है? क्योंकि बेटा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, as it's written over here, as we are aware, petroleum, iron, all of these things, right? They have taken ages to get formed, and now that we have the technology to access them, the rate at which we are in fact exploiting it and using it is way higher than at the rate at which it in fact gets produced, right? मतलब एक तो वैसे ही उनको लाख 5 लाख 1000 साल लगते हैं. It takes a very very long time of period to get formed, and relatively when you look at the rate at which we are exploiting them, using them, is way beyond any comparison. कोई स्केल ही नहीं है. यहाँ इस रेट पे यूज करें, इस रेट पे फॉर्म हो रहा है, शायद ऐसा गैप बना हुआ है. तो मे बी टुडे यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल, वेरी इजीली अवेलेबल, बट इट विल नॉट ऑलवेज बी द केस, राइट? इट विल डिप्लीट. At one point, the future generation will be left with nothing. And just because we want to have development, we cannot compromise on future generation. That's what we have been talking about every now and then. Sustainable development, ecologically friendly development is very, very important. And that is why conservation of these resources, including the minerals and the energy resources, and having conventional replacements with non-conventional, long-lasting things is very, very important, right? जो कन्वेंशनल चीज़ों को हम यूज़ करते आ रहे हैं उनको हटाकर कुछ नॉन कन्वेंशनल चीज़ें लाना जो फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट हो. फॉर एग्जांपल द सन रेज. ठीक है, मिनरल में डजंट काउंट, एनर्जी रिसोर्सेज में सन रेज विल काउंट, बट इन जनरल फॉर मिनरल्स ऑल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ मिनरल्स विच आर एग्जॉस्टेबल. ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर दैट मैटर, उनको रिसाइकिल करके यूज़ करना पॉसिबल है बट थोड़ा ही हो सकता है, सारा कुछ नहीं हो सकता है. फॉर ऑल ऑफ दीज रीजन्स वी हैव टू वॉच आवर स्टेप्स. ऐसे भी कोई चीज़ जो ख़त्म हो जाने वाली है, you have to be very very judicious while using it, right? नितेश, बच्चे मैंने बताया तो यार, बच्चे कि बाकी सारे बच्चों ने तो ज्वाइन किया है. हाय सुजीत, हाय तनिष, गुड इवनिंग. आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो और अपना गोल चेक कर लो. अगर आपका 10th स्टैंडर्ड CBSE सेट है तो आपको होम में इम्बाइब लाइव क्लास के अंडर मेरी क्लास दिखनी चाहिए. ठीक है, अगर नहीं सेट है तो नहीं दिख पा रही होगी, तो आप ये सारी सेटिंग सही से कर लो. 10th CBSE आपका गोल होना चाहिए, उसके अंडर होम में जाना है, होम में बाइब लाइव क्लास में जाना है, वहाँ पे ऑनगोइंग क्लासेस में आपको मेरी क्लास फट से दिख जाएगी. ठीक है, तो कंजम्पशन जो रेट है वी नो हैज़ क्रॉस द रेट एट विच दीज आर बीइंग इन फैक्ट प्रोड्यूस्ड. जिस रेट पे प्रोडक्शन होता है इन रिसोर्सेज का, उसके बहुत बियॉन्ड कंजम्पशन जा चुका है, लीडिंग टू रिसोर्स डिप्लीशन. तो बच्चे जब प्रोडक्शन जो है वो यूज़ से कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम है, यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली धीरे 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 रिपोजिटरी खत्म हो जाएगी, स्टोर खत्म हो जाएगा, नथिंग विल बी लेफ्ट. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी जुडिशियस इन सच केसेस, स्पेशली विथ प्रोसेसेस विच डू नॉट टेक लाइक 5 or 8 years or 10 years, 15 years. It takes millions of years, lakhs of years, thousands of years to happen, right? So if we keep on going ahead with these kind of mining at the same rate, it's going to cost us a lot. दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं? Second, what is the problem? Just now we read that only 1% of the Earth's crust, जो top 1% है, the mineral deposits that we have, which is useful to us, is available. Now in the hope that oh there must be more, हम क्या कर रहे हैं? ज़्यादा dig भी कर दे रहे हैं. तो we are further exploiting the surface also. So continued extraction leads to increased cost due to deeper mining, lower quality ores. Because good quality ores on the top have been consumed, you expect that there must be more. There is more, but the quality is not as good as what was there on the top 1%. Plus you're increasing your cost of mining.
you're destroying the ecology, destroying the environment, you're hampering everything, right? So what we need to plan is have a sustainable resource usage and development of these minerals. Dhang se, aram se, soch samajh ke, right? Hi Surya Bhushan, good evening. Evolution of improved technologies to utilize low grade ores at lower costs. That is another problem. Because we are trying to go ahead with the same old technology where the ores have already been exhausted. Whatever is left, the quality is not very high. With the same technology, same system, same speed, we are trying to extract it. It's costing us a lot of money and time, which is not good for us. Ultimately, it will end up being very expensive. Ek to वैसे ही the supply is going to be less than the demand. Demand is going to be more. Because the technology and the process is going to be very expensive. So we need a technology where we are harming the environment a little less. We are cutting down on the cost, and we are able to use even these ores which is not the best quality in the best way possible. So we have to focus on recycling. Iron which has been used, उसको melt करके दोबारा इस्तेमाल करो. ठीक है, सीमेंट का तो पता नहीं कैसे कर सकते हैं, बट ऐसे और भी जो मिनरल्स यूज करके वी आर प्रोड्यूसिंग मल्टीपल थिंग्स. How can we use it back again? How can we recycle it? How can we reuse it? The 3 R's have to be kept in mind. We have to utilize the scrapped materials, the materials that we have already thrown, disowned. उसको वापस से देखना होगा. We will have to start looking for replacements, the substitutes for conservation. The minerals which are already on the verge of exhaustion, उनके लिए हमें substitute ढूंढना होगा. हमें ढूंढना होगा कि उनको हम कैसे replace कर सकते हैं. How can we find something else in the in alteration of what we are already using and have already exhausted. Okay, chalo. Mineral formation is a quick process making resources infinite and renewable. Is this statement true or is this statement false? This is a very very simple statement है ना, काफी simple है, समझ आ रहा है हमें. मिनरल फॉर्मेशन जो है एक बहुत क्विक प्रोसेस होता है, इसी की वजह से रिसोर्सेज फाइनाइट भी हैं और रिन्यूएबल भी हैं. And we've got the correct answer and very quick from Dhanush, Rudra and Tanmay. Good job. Abhimanyu has answered absolutely correct in perfect timing. Pranati has also taken an attempt. This statement is absolutely false. That is why we are talking about conservation. हमारा पूरा प्रॉब्लम ही यही है कि मिनरल्स नहीं बनते जल्दी और ख़त्म हो जाएंगे, है ना. So hazards की अगर बात की जाए बच्चों, if you talk about the hazards, the problems that the mining leads to, we know there are plenty. Very importantly, the amount of damage that we are causing to the environment and nature. ठीक है, वाइल्ड लाइफ हैम्पर होती है, हम माइंस डिग कर देते हैं, तो उसकी वजह से वेजिटेशन, लोगों की लाइफ, पोल्यूशन वगैरह तो सेकेंडरी, वो नेक्स्ट है. ठीक है, दैट्स द आफ्टर इफेक्ट दैट कम्स. द प्राइमरी इफेक्ट दैट कम्स इज you go into the villages, you go into the forest, you dig up a mine, and then the trees are spoiled, the surface is spoiled, the land becomes useless, वो पूरी ज़मीन waste हो जाती है, and land is limited, right? Forest destroy हो रहा है, wildlife destroy हो रहा है, एक mine बड़ा सा डाल दिया है जंगल के बीच में. Now we know that animals migrate. They're not able to migrate, they're not able to move from one part of the jungle to other because there is a mine sitting in the middle of the jungle, right? These are the problems. And when you damage the nature will get back at you at one point, right? So next is the people who are working there, or let's say even if they're not working, when the whole digging of such huge deep mines are happening, it leaves out the dust and a lot of other polluting materials and substances in the air. बहुत कुछ air में आ जाता है. वो डस्ट जो है, जो नॉक्शियस फ्यूम्स होते हैं, जो धुआं निकल रहा होता है, दे कॉज preliminary diseases which are related to your lungs and inhalation because you're inhaling it. So your lungs, your breathing pipes, all of that is getting damaged, all of that is suffering. We are finding a lot of diseases related to these things. Constant threat of mine roof collapse, inundation and fire and coal mines. A lot of places what will happen, the surface is there, but internally everything has been mined out. So it's kind of hollow. At one point, how long will the surface sustain like that when there's nothing beneath? नीचे कुछ नहीं है, खाली पड़ा है बिल्कुल. तो ज़मीन गिर जाती है. जो उसके नीचे लोग हैं माइंस में, तो वो लोगों को भी हार्म होता है.
कई बार शहर बस जाता है, उसमें हार्म होता है. A lot of places where coal mines are there, you'll find that आग लग गई, ठीक है, uh, it caught on fire, and then everything will burn. An amount of carbon monoxide that is then released, and the amount of pollution that further adds on to the risk that it adds on to the nature, to the people, to the civilization. Then of course inundation, the soil erosion that is happening, the damage to the land that is happening, that is an additional problem. ठीक है, we know that mines की वजह से lot of toxic materials जो है वो land का जो भी है is getting disposed into the water and other places. So it is contaminating the water sources nearby because of the mining activities. Dumping of the waste or the slurry leads to land and soil degradation. Now what is happening, when you have done the whole mining thing, there will be material that you need, right? But then there will also be material that you don't need. So you just dump it somewhere. It's a lot of times toxic in nature, not useful. So it's wasting the resources. It's further creating pollution in the air, and of course also harming the waste and the slurry material, whatever is the leftover. वो लैंड को भी हार्म कर रहा है, सॉइल को भी हार्म कर रहा है, उसको भी डिग्रेड कर रहा है, एज वेल एज रिवर एंड स्ट्रीम पोल्यूशन भी कॉज कर रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यार जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ माइंस में, जो इन्वायरमेंट है, कटिंग ऑफ ट्रीज, दीज आर थिंग्स जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, हमें हमेशा से पता है, राइट? हाय उत्कर्ष, these are some hazards, some problems, some side effects of mines that we in general have. So let's quickly answer the last quiz question of today's session. Inhaling dust and noxious fumes causes dash diseases: skin, stomach related or pulmonary. What kind of diseases are caused when you actually inhale the dust, when you inhale the harmful fumes? What does it lead to? Okay, and let's look at your responses. So we have Abhimanyu has answered absolutely correct and perfect timing. Rudra और Pranati ने भी सही जवाब दे दिया है. Tanmay has also taken an attempt. Okay, great. So guys, it is the pulmonary diseases related to lungs. Dhanush का भी answer आ गया. Wonderful. So inhaling dust and noxious fumes that leads to pulmonary diseases, breathing issues, lung cancer, ऐसे कई सारे problems जो हैं होते हैं. There's those drilling machines and everything, they are also creating noise pollution. So ज़मीन pollute हो रही है, water pollute हो रहा है, ज़मीन damage हो रही है, erosion हो रहा है, air pollution हो रहा है, noise pollution हो रहा है. So many problems that is being led because of the mining activity. Plus the harm that we cause to the environment, the degradation of the minerals and resources, right? So summarizing what we have done in today's session, we read about mica, which is a thin, a very versatile mineral with diverse industrial uses in electronics. It is found in specific regions of India like the Chota Nagpur area, ka northern portion. So you have a huge belt in Jharkhand, you also have in Andhra Pradesh, Nellora, ठीक है. Limestone की बात की जाए तो it is essential for cement, it's the raw material. Iron smelting में भी blast furnaces में it's very useful. Usually found in sedimentary rocks across geological formations. Conservation, why is it important? Because we know that finite resources hai, the damage that is caused to the environment and the amount of time that minerals take to be formed is way ahead. Then is very long compared to the time span in which we are using and finishing it up. For all of these reasons, so for sustainable use, for reserving it for our future generation, we need to have it. Conservation की बात की जाए तो mineral resources are limited, it depletes faster than they form. Sustainable use is important and technological advancement in order to have crucial for longevity but also to cut the cost. Hazards की बात करें तो हमने देखा है कि miners face health risk from inhaling the pollutants. Mines causes water contamination also, land degradation also and pollution also. Efforts are needed for safety and environmental protection,
and conservation of resources in general. The minerals extracted from the earth's surface give us the energy required to power our homes and industrial. These energy resources are also limited in their content, and hence humans are looking towards renewable sources of energy. What are the various energy resources that we use and what it can be replaced with? That's the most interesting part. अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बट हमने एनर्जी रिसोर्सेज में कुछ ऑल्टरनेटिव्स निकाले जिससे हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. जो कन्वेंशनल सोर्सेज है, जो फाइनाइट है, जो एग्जॉस्टेबल हैं, उनको बचा सकते हैं. वो हम अगले सेशन में कल करेंगे पता. सो स्टे ट्यून्ड. ना नितेश आई थिंक वाज कॉन्टिन्यूसली आस्किंग कि मैम आपका सेशन नहीं दिख रहा है. तो बच्चे देखो, व्हेन यू लॉग इन प्लीज़ मेक श्योर कि आपका एग्जाम गोल सही सिलेक्टेड है. यू हैव टू गो ऑन CBSE. मेक श्योर कि आप 10th जो है वो सिलेक्ट कर रहे हो, इंग्लिश सेलेक्ट करके यू कम ऑन दिस पेज. व्हेन यू कम ऑन दिस पेज आपको होम पे रहना है, होम पेज पे आना है. होम पे हमारे पास ऑप्शन आता है एम्बाइब लाइव क्लासेस का. यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यू विल बी एबल टू सी द सेशन दैट इज हैपनिंग. तो ये देखो, ये लाइव चल रहा है अभी, राइट? हजार्ड्स ऑफ माइनिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ मेटल. Tomorrow we are going to talk about the conventional sources of energy at the same time 7 PM. बच्चों एक और चीज़, टाइम जो है वो थोड़ा बदल गया, 8 बजे से 7 बजे हो गया. अब हम 8 बजे सेशन नहीं कर रहे हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको सारे सेशंस जो हैं वो 7 बजे ही दिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो. सो ये कल का सेशन है और उसके बाद का सेशन ये देखो, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अगेन एट 7 PM. So make sure that you are registered for this session so that such problem of मैम सेशन नहीं दिख रहा, हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मिस हो गया है, ये सारे इश्यूज ना हो. एंड विल ऑल्सो बी डूइंग एन एडिशनल सेशन स्पेशली फॉर दिस चैप्टर विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ मैप वर्क, बिकॉज दिस चैप्टर हैज़ अ लॉट ऑफ मैप वर्क इंक्लूडेड एंड इट्स इम्पॉर्टेंट. तो और डर भी बहुत लगता है, तो इसके लिए भी रजिस्टर ज़रूर कर लो, ठीक है? सो वंस यू रजिस्टर्ड, you're good to go. You'll receive the notification. Make sure you're registered for all the sessions that you want to attend for all the subjects and all the teachers. तो आपको मैंने पूरा प्रोसेस जो है वो दिखा दिया है ना? ठीक है. जय श्री राम. हाय बच्चे, वेलकम. So this is how you can register yourself and make sure you do not miss on the sessions. And guys, please do not forget to check out the Embibe Lens app. Basically, you have to scan any text. और वो टेक्स्ट को आप जैसे ही स्कैन करते हो ना, you'll find all these highlighted words coming up. And you just have to click on that word and you can further read about it, other related things. Pictures आ जाते हैं. The whole process of learning, even if you're doing out of fun, entertainment भी है और learning भी है, दो चीज़ तो नहीं सीख ही लोगे. तो और ये ऐप फ्री है, तो ऐप डाउनलोड करो, कैमरा का परमिशन दो, स्कैन एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट. किसी मेडिसिन के पीछे क्या डिस्क्रिप्शन लिखा है, किसी क्रीम के पीछे कुछ लिखा है, कहीं पे भी कोई भी टेक्स्ट लिखा है, you want to learn more about it, you just want to have fun, scan it and learn about it. It'll be really fun, right? तो इसी के साथ a quick reminder, do not forget to join our Telegram channel of 9th and 10th. This is the link and this is the QR code. So guys, we have winded up the session for today now. Thank you so much for being here. I'll see you guys tomorrow at 7 PM. Well, we will talk about the conventional sources of energy. So till the next time, have a great evening, have a great time, take good care of yourselves and your loved ones. Bye-bye, hasta la vista, ciao. Students watching on YouTube, do not forget to like, share, subscribe, and do tell me in the comment section. You can tell me if you have any doubts, any queries, or apart from that, how did you like this session? If there's anything else that you would want me to plan for you, कोई session है जो आपको चाहिए कि मैं plan कर दूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं. And very importantly, for the rest of you, make sure you're registered for the session. You do the post-class activities. It's very important. So see you tomorrow at 7. Till the next time, you guys, stay tuned, take good care of yourselves and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.